सो वैसे तो ये सारे कॉन्सेप्ट स्कूल में कवर किए जाते हैं, स्पेशली इफ यू कम फ्रॉम एन आईसीएसई और सीबीएसई बैकग्राउंड, इवन फ्रॉम अ स्टेट बोर्ड बैकग्राउंड. बट हो सकता है कि जिस दिन स्कूल में ग्रामर पढ़ाई जा रही थी आप छुट्टी पे थे. हो सकता है जिस दिन ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा था क्लास में फ्रॉम योर इंग्लिश टीचर और योर हिंदी टीचर, आप उसको देख रहे थे. So whatever happened. But like we say in the education and the learning and development domain, it's never too late to start understanding something, gain more knowledge, and then of course to make it your second nature. But वो एक journey है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे थोड़ा. Today's video is about a figure of speech called pun. Before I start, I'll tell you how this idea came into my mind to make a video on a figure of speech, for example. It's such a small concept. Lately, what I've observed is across sessions, so if I'm interacting with corporates, if I'm interacting with students from colleges, or helping first-time employees through something, so काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया, सर हम अपने कम्युनिकेशन में डेप्थ कैसे लाएं. When I say depth, what they were essentially asking me was, आप कई बार एक सेंटेंस में बहुत कुछ बोल देते हो, एक सेंटेंस के ही 4-5 मतलब निकल जाते हैं. सो मैं भी वैसे कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, बट मुझे पता नहीं है कि मैं वो कैसे कर पाऊँ. सो लेट मी इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट. इट्स अ पार्ट ऑफ डिफरेंट फिगर्स ऑफ स्पीच दैट वी हैव. चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे आपका मदर टंग हो, देर इज दिस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बिहाइंड इट. और लैंग्वेज और कम्युनिकेशन को एनहांस करने के लिए देर आर फिगर्स ऑफ स्पीच. सो पन, फॉर एग्जाम्पल, राइट. How it is used is, let's say there's this Shakespearean play जहाँ पे the first line is एक cobbler बैठा हुआ है, that is the scene, and there's this guy who's passing by. ये कौन सा play है? Please drop your answer in the comments. I would like to see how many literature fans we have. But it is a Shakespearean play, and in the very first act, scene 1, cobbler is a mochi. Right? So एक आदमी उस रास्ते से जा रहा है and he looks at the cobbler and he says, what are you doing? And the cobbler says, I'm stitching soles. It's a very famous sentence. So soles. Now this sentence, I'm stitching soles, means a couple of things, right? आत्मा की भी बात हो सकती है. And on the other hand, what he was essentially doing was, वो एक shoe का sole stitch कर रहा था. So pun is a very useful figure of speech, and like I said, these things are applicable across languages. आप अपना कम्युनिकेशन एनहांस करने के लिए इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हो. हिंदी में इसको यमक अलंकार बोला जाता है. काली घटा का घमंड घटा. सो देर आर दीज टू वर्ड्स, घटा घटा, बट दोनों का मतलब अलग है. वन इज बीइंग यूज्ड फॉर सब्ट्रैक्शन, द अदर इज यूज्ड फॉर क्लाउड्स एंड रेनी क्लाउड्स रादर. अगेन, लाइक आई सेड, लर्निंग इज द प्रोसेस. सो आपने कभी जिम स्टार्ट किया हो पहली बार, या आपने अपने दूसरे हैंड से लिखना शुरू कर दिया हो जो आपका डोमिनेंट हैंड नहीं है. सो व्हाट हैपेंस इज लर्निंग इज मेसी, लर्निंग इज अनकंफर्टेबल, एंड इनिशियली व्हाट हैपेंस इज आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है. सो हो सकता है कि आज आपको एकदम से ये लगे कि मैं यार पन अपनी लैंग्वेज में बार बार कैसे यूज कर सकता हूँ. आई मीन इट्स जस्ट इम्पॉसिबल, इट्स सच ए ह्यूज टास्क, ब्ला 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 ब्ला. बट इतना डिफिकल्ट नहीं है. सो व्हाट यू कैन डू इज, फ्रॉम लेट्स से डे 1 आपने डिसाइड कर लिया कि मैं आज शाम को बैठ के 2 सेंटेंसेस लिखूंगा जहाँ पे एक वर्ड के 2 मतलब होंगे, या द सेम वर्ड विल बी रिपीटेड और उसके 2 मतलब होंगे. उन वर्ड्स का स्पेलिंग अलग हो सकता है, बट इनंसिएशन सेम होता है. सो व्हेन इट कम्स आउट ऑफ योर माउथ इट्स प्रिटी सिमिलर. सो सोल एंड सोल, दीज आर 2 डिफरेंट वर्ड्स. शू सोल एंड द स्पिरिट, और वट एवर यू लाइक टू कॉल इट, 2 मतलब हो गए एक ही वर्ड के. फॉर एग्जाम्पल, स्पेलिंग अलग है, SOLE एंड SOUL, बट प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्टली सेम है. काली घटा का घमंड घटा, again the word ghata is being used twice, so pronunciation has to be same. आज आप 2 sentences लिखो, कल आप 5 sentences लिखो. Give yourself half an hour, give yourself 45 minutes, and then start using first and foremost those sentences forcefully in your conversations. आपने वो 2 sentence लिखे, decide कर लो कि कल मैं किसी ना किसी से बात करते हुए 2 sentence वहाँ चिपकाऊंगा ज़रूर, चाहे ज़रूरत भी ना हो वहाँ पे, right? So you practice it. आज 2 sentences लिखो, कल उसको बोलो किसी को. Then write 5 sentences, then use some of those sentences in your conversation, and slowly and gradually increase that number. आपको पता भी नहीं चलेगा, because application is the most important part when it comes to learning. Learning का aim है कि आज मैंने कुछ नया सीखा, and eventually after a certain period of time
वो परमानेंटली मेरा सेकंड नेचर बन जाना चाहिए ऑलमोस्ट. आज मैं लेफ्ट हैंड से लिखना स्टार्ट करूंगा. आई एम राइट हैंडेड गाय. सो आज मैं अगर लेफ्ट हैंड से लिखना स्टार्ट करता हूँ, वो पढ़ने में भी नहीं आएगा. इट विल बी दैट इलिजिबल, राइट? But if I start doing it on a daily basis, and I'm sure all of you will agree, it will eventually turn into my second nature. अगर मैं रोज लेफ्ट हैंड से आधा घंटा लिख रहा हूँ या एक पेज लिख रहा हूँ, after a certain period of time, after a certain amount of practice, it will become as good as my right hand. There is just no two ways about it. वो होना ही होना है. हाँ, अगर मैंने उसको बीच में अपना प्रैक्टिस और एप्लीकेशन वाले पार्ट को छोड़ दिया तो मेरा लर्निंग प्रोसेस ही रुक गया पूरी तरह. So I'm really excited. Please try and use this as a part of your communication, whichever language you're using. You can always use pun, a figure of speech, and it will enhance your communication. Start practicing it. गलती भी हो जाए एक दो बार तो big deal, right? And good luck. Keep asking for more questions. And if you want to watch more videos like this, do follow our YouTube channel. You'll find the link in the post itself as well as in the bio. And we would really appreciate you sending your questions in, and that will give us more videos to talk about and more topics to discuss. Have a great day. Take care.